रोहित जी, हमारे जो आज के एमिनेंट स्पीकर हैं डॉक्टर पंकज कुमार साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। आप उन्हें को होस्ट बनाइए। डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। आपने ज्वाइन किया। आप हमें सुन पा रहे हैं? पंकज सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कृपया बताएं। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार। मैं बहुत अच्छे से सुन पा रहा हूँ आपको। जी डॉक्टर साहब, विद इन 5 मिनट्स में हम स्टार्ट करते हैं। श्योर ठीक श्योर है। श्योर। पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं विद इन हाँ फाइव हाँ, मिनट्स में। श्योर पांच श्योर मिनट श्योर। विलंब के लिए क्षमा चाहेंगे हम। नहीं और नहीं आपने नहीं, ज्वाइन इट्स किया। इट्स ओके, प्लीज। ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, ओके डॉक्टर साहब। रोहित जी, आप जरा सर्च करिए डॉक्टर एस वी खरवड़े साहब। उन्होंने ज्वाइन किया है। एस वी खरवड़े साहब, उनको कोहोस्ट बनाइए। वो हमारे डायरेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, डीन एग्रीकल्चर भी हैं। ठीक है। आप उनको कोहोस्ट बनाइए। Yes. Your screen is there, sir. Just start the PPT. Yeah. Okay, thank you for the confirmation. I will just put it. Can you see my रोहित screen? आप रोहित कोहोस्ट बनाया आपने? हाँ डॉक्टर साहब, देख पा रहा हूं मैं। बहुत अच्छी तरीके से विजुअल है, देख पा रहा हूँ। Okay, okay, किस thank you. जी। सर? सर ने किस नाम से ज्वाइन किया सर? KHARBADE करके सर्च करो। KHARBADE। डन सर, डन। सर नमस्कार, खरवड़े सर, आप सुन रहे हैं हमें? नंदिनी, आप रेडी हैं? हाँ जी सर। ठीक है। ऑडियो वीडियो डन। विद इन 1.5 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। 200 कैंडिडेट, 200 पार्टिसिपेंट्स आई थिंक आ गए हैं।
और जो बाकी के 200 और बचे हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे। ठीक है, तो आप स्टार्ट करिए। सर ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? हाँ, यस यस, ऑडियो वीडियो क्लियर है डॉक्टर साहब। A very lovely good evening to everyone present here and joining us virtually. I'm Nandini Sharma, Assistant Director HR at AgriMeet Foundation Bharat. Once again, extend a heartfelt welcome to all the distinguished delegates, eminent speaker, and participants to the Day 2 of International Winter School Bharat 2025. Bharat 2025 is a 30-day international academics and training initiative jointly organized by AgriMeet Foundation Bharat and UGC MMTTC Jodhpur in collaboration with national and international universities. This global program focuses on empowering students, researchers, and faculty members through advanced learning modules on precision farming, climate resilience, renewable energy, AI, and digital agriculture, biotechnology, and sustainability. With the theme Boosting Holistic Agriculture Through Research, Awareness, and Training, the Winter School is committed to building a generation of innovative and globally competent professionals who will lead agriculture and environmental sciences towards a smarter, more sustainable future. So, today we are truly privileged to have with us an eminent scientist whose work beautifully combines data, innovation, and environmental responsibility. Dr. Pankaj Kumari, Associate Professor at IISER Bhopal. Dr. Kumar is a distinguished meteorologist and climate scientist with deep expertise in climate variability with change, Earth system modeling, cryosphere dynamics, and AI ML applications in environmental sciences. His pioneering research enhances our understanding of extreme weather events, precipitation extremes, glacier hydroclimate interaction, and monsoon dynamics, aligning closely with IPCC assessments and India's national climate priorities. He has led the development of high resolution regional Earth system models of South Asia under WCRP Codex initiatives, improving projections of Indian summer monsoon and ocean atmosphere interaction. His effort advanced the UN Sustainable Development Goals SDG 13 climate action, SDG 6 clean water and sanitation, and SDG 14 life below water. A prolific researcher, Dr. Kumar has authored over 60 peer reviewed papers, guided 13 PhD students, and trained more than 50 researchers. He has been honored with Ramanujam Fellowship and MPI Visiting Scientist Fellowship and currently serves on international expert panels, including the WMO expert team on hydrometry and the CLIVR JUIX monsoon panel. His remarkable contribution continue to shape global dialogue on climate resilience, Himalayan glacier change, and freshwater availability. We are deeply honored to have you with us today, sir. On the behalf of AgriMeet Foundation Bharat, I extend our warmest welcome and gratitude. We eagerly look forward for your enlightening insights on climate variability, resilience, and sustainable environmental solutions. Ladies and gentlemen, please join in warmly welcoming Dr. Pankaj Kumar, sir. The session is yours, sir. Thank you, Dr. Nandini, I was a bit embarrassed listening all these things, but I thank you for your very warm welcome. And I also thank organizers, Ankurji and others for giving me opportunity to speak to this very audience. And I'm sure that I will be able to fulfill at least some of the things which at least you have thought of. So my topic is very simple today. So my target is to talk a little bit about kind of information and then slowly little bit science, because climate science is also not much taught in textbook. So slowly it's a evolving science. Most of the things are hypothesis. It's basically based on physics, but many things are evolving, and then you have to change your statements. So I will try to justify these things, what I'm saying. So what I will be covering, just to brief a little bit, that let me get a pointer here, if I can.
Anyway, so I will be talking on science of climate variability and change. And I'm Pankaj Kumar, as introduced. I'm working at ICAR Bhopal in the Department of Earth and Environmental Sciences. And largely, I work with climate models, which deals with the glaciers and also the climate projections. We have to be very careful. One thing which I will just throw the idea that we have to be careful between climate projections and weather predictions. Weather is always predicted and climate is always projected. So climate is not predicted. So that is a bit of point, which these are some basic definitions which we should be clear enough that why the climate now, there is a very common question which comes to us very frequently कि आप 2 दिन 4 दिन का वेदर तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 10 साल और 50 साल का क्लाइमेट कैसे प्रिडिक्ट कर देंगे? How much reliable it is? So it's a both are different ball game, different stories. So climate is a more of probability forecast, projections, and weather is prediction. So we just we use today's data or a few hours before data and try to predict next 6 hours. But in climate, it's a different ball game. So in climate, let's say we are predicting climate 2020 to 2050. So in climate, we will never say that in 2030, what is the day today? Maybe 5th of November in 2040, there will be a cyclone will be coming. This is not done in Naman. We only talk about statistics, frequency, intensity, duration, these kind of trends. So science is more on those things. Like this, like we cannot tell that who will die tomorrow or when, but we can always, certainly we can say that when an individuals in India will die, what is the average age of Indians? And why it is important? It is important because you need these kind of data for long-term policy and planning. If you know the average age of Indian, then you can decide what should be the pension age, what should be the premium age, different insurance companies. There's a lot of things which roams around those things. So with this background, I will just move ahead. So now I can see that I can get a pointer, laser pointer. And so what I will be largely covering in this talk is in an hour, what time I got, what are the scientific basis and the variability, which is short-term things, which is like ENSO, monsoon, which comes with seasonality, and then the changes, like large changes, global warming. Yeah, there is a difference between global warming, climate change, global change. They all are different words, but people use it like a synonyms, like एक ही चीज है सारी चीजें, ऐसा नहीं है. Integrate, then we will talk about climate system components, its feedbacks, which is most important thing, modeling, and human influences. So we will try to cover this. So I thought that since I'm talking to agriculture community, so I have kept 4 or 5 slides just for statistics. So it has nothing to do much with science. It's just kind of information. So just to gauge my talk and agriculture discipline together. So with only 2.4% of world total land area we have, 18% of global human population supports this 2.4% of agriculture area, and 24% of livestock of global we host in this small area, and large population, both humans and other things. If we look into the per capita availability of agricultural land was around 0.46 in 51, which has significantly decreased at least by 75% in 2018. So it's again, whereas global average is very high. If we look into the people dependent on each hectare of net crop was 3 in 1951, and now it is projected it should be by this year, it should be by 8 people depending. So that's the density and all is increasing. And since we're talking about South Asia, our part of world, and our part of world, the main component of this part of world in climate perspective is monsoon.
because monsoon is bread and butter of our part of world, because it only brings the rainfall. Rainfall is the only source of water for this part of region, globe. And only 2-3 months you get water, and rest of the year you are dry. So whatever water you store, harvest, and that only you use it for rest of the year. Otherwise, you will become Middle East. You cannot survive here. This large population, billions. And however, due to competing demand for different our day-to-day needs, whatever you talk about, the per capita agriculture land is rapidly decreasing, because we are cutting forest for agriculture towards smart cities or cities. So, and of course, with the increasing population, it is situation is expected to be worsen in future. On the other hand, climate change is affecting the regional climate through extremes, even on intra-seasonal variability. Actually, why we are worried about climate change? We humans are very selfish people. We are only worried because it is bringing, if temperature is 5 degrees increasing, we don't care. But why we are worried? We are worried because it is bringing extremes, and we are not in a position to handle extremes. And that's why last 2-3 decades, there is a lot of talk about climate change, because it is causing a lot of loss, not only economic loss, but also the human losses, which we are not in a position currently to handle it. So therefore, it is essential to understand these systems, both globally and regionally, to provide a better system. If we look to food grain production, of course, it is increasing significantly. This is some statistics, as I said, I'm showing you. It is leading our economic purchasing power is increasing, per capita is increasing. This is a very interesting slide to look at it. I like to show this. If you look at the sector contribution to GDP, so the agriculture, which is started in 50s, during independence, was 50+% of contribution was in the GDP was agriculture. With time, it has significantly decreased and has reached to 14 to 18%. The other sectors, the two important sectors, service sector and industry sector. If you look into the industry sector, it has not evolved much. Still, you see kind of 17, 18% to 27%. It is much less, still a very flat line. Not much. It is huge scope here to do those things. Even government is pushing a lot in this sector. And this is the slide. This is the line which is a concern for always for us as academics, that most of the area where we are improving is the service sector. Service sector is like software industry or BPOs or NGOs. There are other service sectors where we are working. All our best brain which we are producing are going into the service sector. So you're getting graduated. I don't want to talk this, but at least just to give my idea, you are graduate from IIT and you are working for a multinational company to build a software. So you're not using your services. All of them are software engineers, irrespective of their disciplines. So that need to be somehow channelized. So if we go back to the point that the agriculture sector, which is 18% or so, or 14 to 18%, but the problem is that at least 40% of our farmers are still engaged in this their economic strength, economic dependence is on agriculture, which is 42%, which is still a very large number, even though GDP contribution is 14 to 18%. So if we look into the CO2 or crop yield, the climate change and agriculture, if I talk about, so increase in CO2 obviously will increase initially the productions, but of course, after a certain point when the temperature goes higher, it starts affecting the crop yield. And rising temperature, as I said, will are expected to decline if the temperature goes beyond 2 degrees. I will talk about why 2 degrees, why not 5 degrees, why not 1 degree, why not 3 degrees. So this also is a magic number from where it is coming. And impact of climate change will be on rain-fed crops, because as I said, a lot of people depend on this, and
if the extreme is coming, let's say monsoon is gone and now the cyclones which were supposed to come 2 cyclones in a year, now you get 5 cyclones in a year because Arabian Sea is also warming. So 5 cyclones will come, all your crop will die if it comes and it just give the rain for, let's say, 3 to 5 days or 2 days. Even 1 day is enough to spoil the agriculture. So this is again a big challenge, and we are expecting a rise of 3.5 degree and 2 to 3.5 degree with the crop reduction of around 9 to 25% at farm level. So this is some basic slides I kept so that it looks that I also have some background on this topic. Now come to the little bit of science of these things. So how do we predict the climate? So before we predict the climate, we should know what is Earth system. So technically what we are doing, we are trying to mimic our Earth into models, which is a very tedious job. How? Let's walk through. So Abhi, Earth is a complex system. It is made up of matter, living things and non-living things. Energy, sun is the ultimate source of energy, which keeps the life on the planet. And our planet is a very dynamic body with many separate but highly interactive parts, which we call as spheres. They do have an endless array of subsystems in which matters is recycled over and over again. So we have atmosphere, this is Earth system, atmosphere, geosphere, hydrosphere, biosphere. Now, all these systems, they interact with endless arrays, feedbacks in a real time. And the problem is that when you try to mimic these systems in a climate model with physics, chemistry, biology, software engineer, hardware engineer, all those people, climate scientists, weather scientists. So it's a multidisciplinary approach. A lot of human research in all these disciplines is needed to mimic this system virtually into a climate system to talk about those things. I will give more exposure on this later. So this endless array, if I give one example, let's say even with when the energy, northern hemisphere, when summer is more into our part of world, so then the more heating will lead to more evaporation lead to difference between land and ocean, and then the wind will start moving from cold to warm, so there is towards the land, and then they bring a lot of moisture from there. And when then moisture, then a lot of heat, which pumps them into higher up, and then clouds form, rain. Again, rain forms and goes to the rivers and then walk through the ocean. So then the process is started in the ocean, goes into the atmosphere, then the rain comes, biosphere, geosphere, the whole endless loops, continuous things. And it's the same for so many loops which will be existed in the system. I'm talking just for to gauge with this talk. So if we remember that Earth has 4 spheres, there are other components, small as well. And this is, if we remember the law of conservation in the physics, the law of conservation of mass, momentum, energy. So what does this mean? The mass cannot be exchanged, only energy can be exchanged. So you cannot take out anything out from the Earth and take it to the, let's say, other planet, unless you are sending some expedition also, which is now possible. Earlier, it was not possible also. So that also a small mass you can take out of this. So whatever is here will stay here only, will not go outside. So it will conserve. So this is these things. But in recent decades, what has happened? We are artificially changing the whole composition of Earth by making anthropogenic activities, which we call it as an anthroposphere, where we are changing the whole composition of the Earth system by changing the forest to agriculture, to urban areas. And if you talk about geologically, we are living in Holocene era, which is from now to 8 lakh years below. But now there is already discussion from 1950 onwards, we are living into not in Holocene era, we are living in Anthropocene era.
Still, it is a lot. There's a lot of debate, but there's people are saying that we have already jumped into a new era. So this is now, if you look into the climate system, which I was talking in the previous slide, this is a small picture which tells what I'm talking about. So I'm talking in climate system. We already have shown those spheres and all. So this, we have ocean, we have atmosphere, we have the space in the atmosphere, where we have the ocean and ice, they interact each other. We have clouds which precipitate. We have winds which drags the moisture. We have air's interaction. We have land. We have human settlements. We have rivers, ponds, carbon cycle, nitrogen cycle, vegetation, biogeochemical cycle, glaciers, snow, ice, everything, whatever we see in our surroundings, wherever, in which part of world we are, all those things are part of climate system. Now, if we talk about the Earth system science and its study, it is in simple words, it is the interaction between the ocean, atmosphere, living things, geological process, land surface dynamics, and human systems. The process that connect biological, physical, and human system operating near the Earth's surface is the Earth system science, and how the interrelationship between the physical and biological system impact each other and lead to changes. So that is another thing. And to do these things, we use, as I said, climate models. They are the mathematical representation of those climate system based on the physical, biological, and chemical principles and laws. And these are essential tool in weather and climate to understand the process responsible for observed changes and make prediction and projections. So technically, this is my last slide, but I am keeping this, and then I will see that, and show that all this process, how this happens. So this is usually when you talk about a climate model, it is run at the global scale, where you divide globe into different grids, and then of course climate is not on the surface of the Earth; it is in the atmosphere. So you have to mimic the Earth into different layers. So if you mimic the Earth into different layers, and also into the oceans, because then you need ocean is the most important energy, or maximum energy is stored in the oceans. Sorry. So so you have to have at least 40-50 layers in the atmosphere and 40-50 layers in the oceans. And each grid box, which I'm putting here, if you look here, each grid box, you have to run all these physical processes. This is, let's say, this grid is at the ocean, where ocean, continent both are there, but there will be grid where only continent will be there, or only glacier will be there, or only vegetation will be there. So all these processes which I have shown here, this you have to do at each grid scale, whatever fall on in that grid. So this is there. I just put some numbers so that so if the model is 1 degree by 1 degree, means 360 degree and 180 degree. So roughly, and if you have 100 levels, so you have around 6.5 lakhs of grids on which you are doing simulating all these processes at every 20 minutes. So this is an enormous amount of computational resources are needed. Very, very high-end supercomputers, which we called HPCs, also are needed to do these kind of simulations. Now we look into the little bit, go back and talk about the climate variability and change with some cartoons. So climate variability, if we talk about, as I said, it's the smaller time frame we are talking about. So it is whatever we are talking about in the month, year to decades. So weather is, as I said, is hours to days, ना कि हम कल का क्या वेदर होगा, परसों का क्या वेदर होगा, 3 से 5 दिन। टेम्परेचर तो हम 2 हफ्ते तक भी प्रेडिक्ट कर देते हैं, लेकिन रेनफॉल जो है वो 24 आवर्स से ज्यादा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सिग्नल हम बता देंगे, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होता है कि भोपाल के ऊपर ही पानी बरसेगा या दिल्ली के ऊपर पानी बरसेगा। वो थोड़ा सा 24 आवर वाला ज्यादा 80% रिलायबिलिटी, 89% रिलायबिलिटी होती। फिर हम दूसरे स्केल पे जाते हैं, जब हम मंथ्स टू
to, let's say, year or decade scale पे जाते हैं, so this is something like ENSO cycle, monsoon cycle. This is all what we talk about. Or different, there are other climate modes also, IOD, PDU, and all those things. और climate change क्या है? Decades to century, larger scale, global scale system है. So these are the different scales when we talk about in these time window. And climate variabilities, let's say I'm looking into the temperature data. ये भोपाल का temperature data. ये of course दिसंबर होगा, फिर जुलाई होगा, फिर दिसंबर होगा. ये yearly fluctuations आपको दिख रहे हैं. और ये जा रहा है, लेकिन ये इसकी फ्लक्चुएशंस, इसकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, सीजनैलिटी है. क्लाइमेट चेंज, इसमें क्या, क्लाइमेट चेंज का भी एक मैंने ट्रेंड अगर मैंने खींचा, और अगर ये लाइन दिखा रही है मुझे कि even though you have yearly fluctuations, but there is an increasing trend, whatever it is temperature. And whatever is at the extremes, these are extremes, which is at the top or at the bottom. Now, it is, let's say it is temperature, this is warm extreme, and this is the cold extreme. So this is the way we look into the data. Now, this is very basic slide. What is weather? Exactly what I said, what we look outside, and climate is what we look at. But the problem is that even this definition, many times people misses it. Climate, when you talk about climate, you should always look for at least 30 years or more. And so what is the climate? It is Bhopal, it is tropical climate, or it is arid climate, or it is polar climate. So these things we tell in the average type of thing, not 10 years data you can take and start talking about climate. And also, when you talk about climate, you should also talk about the extremes. In 30 years, how many years you have ENSO years? How many times you crosses the threshold of extremes? So let's say 5 times you were ENSO because of extremes. Monsoon was a drought year for 5 years. In 30 years, 5 years were drought years, and 3 years were flood years. So then farmer will be happy to learn that, okay, this is my probability, so that when I plan for sowing and all, if it is an ENSO year, how do I should behave? If it is ENSO, if it is an El Nino year, what approach I should follow? Or if it is a La Nina year, what approach I should follow, or the other way around. So extremes also you need to tell in the climate system. Very basic slide. In the 4th, 5th standard, we start looking into these things. Yeah? What is Earth has both rotation and revolution. This is the only reason for the seasons which we have, and Earth rotates very fast. If you remember, if you don't know, it's a speed. It's a typo here. Speed at equator. If you think when I will finish this class, at least Earth will go to Delhi. The distance travel will be. It will go to Delhi, come back to Delhi, and then again go back. So this much fast we are rotating right now. It's because of the centrifugal force and other things. Nothing falls out. So important point is that Earth has a tilt. Tilt is 23.5 degrees. Because of that, we have Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This is the only region, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. In this region only, the sun rays falls directly perpendicular in these areas any point of time during the year. So we have summer in northern hemisphere. Summer is in June, July, August, and then in winter hemisphere, December, January, February. Now that's why the Indian team goes to Australia, New Zealand in winter. Why? Because they have a summer in December, January, February. So we have a more daytime to play cricket there. So this is the region where the maximum sunlights fall, and rest of the area sunlights goes slant. I will show. I have another better figure next, just to give you an idea. And because of this 23.5 tilt, we have Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn at 23.5 degrees. This is just only because of that. If you not notice that, this is what I was telling. So if the sun rays, which is coming into the atmosphere, so 23.5 and 23 degrees. So in this area, you have a perpendicular heat coming into the system, because heat
is a physical quantity. Temperature is a physical quantity. It affects both biotic and abiotic features. Yeah, it affects humans and living and non-living both. So if it is more, it will affect more. It will less, it will affect less. So the same rays, when they go into the upper atmosphere, this is Earth and this is atmosphere. Yeah? So when it enters into the atmosphere, it has to travel a larger distance, which creates a lot of scattering and the intensity reduces. And that is why at higher latitudes, we have mild temperature in Europe, Australia, these areas in the southern hemisphere or in northern hemisphere, we have colder weather. If we look into the now the heat budget, heat distribution globally, so this is 90 degree north to 90 degrees south, and this is the energy. So if we look in the equator, we have a surplus around 30 degrees or so. No? So we have a surplus, and we have a deficit in the polar regions or subtropical regions. And this is because of the tilt of the Earth, no? Because sun only can march between between 23 degree north and south, where you get the maximum heat. And this creates the pressure differences, and leading to winds and weather patterns. No? Because if you have a differential in heating, this will create the wind to move and the weather patterns to form. Another important point is this Coriolis effect. Because of the strong rotation of the Earth, because of the strong rotation of the Earth, the difference. If you're in northern hemisphere and if you throw a ball, or if you launch a satellite, let's say a missile, so it will deflect towards right in the northern hemisphere and will deflect towards the left in the southern hemisphere. So whenever you launch a missile, let's say, or even ball you cannot throw, so you always have to take care of the rotation so that you hit the target. Otherwise, you launch something, wherever you launch, it will, if you have seen the speed, within an hour, it will move more than 1,000 kilometers. So you have to make all those corrections before you do. And ocean current shaped by the sun and the Coriolis effect, because oceans are the main source. They store a lot of energy. So, and they mix and they create the current weather. And ocean atmosphere interaction is very important. I'm quickly skipping because if I go more into this, I will be stuck there. If I look into the temperature, global temperature, which I just showed in this slide also, this is the same thing I'm just showing in the spatial plot. So if you see, this is what I was shown, over equator, it is more, over the polar regions, it is less. So absolute temperature vary a lot depending upon location and season. It is very cold in these areas, -20, -30, -40. And here you have 20, 30. So it's a 30, 40 degrees temperature is there. So whenever you represent any climate change signal, you always represent in the form of anomaly. That is the reason, because if, let's say here, if there is a temperature and it was -40 and it becomes -35, who cares? But when you will say, okay, I'm still 30 degree and you are having -35 degrees, you should be happy enough, of course. But then if you if you look into the anomaly, then you will learn that, okay, with respect to this particular area climate, the changes in this area has occurred by 5 degrees centigrade. Whereas if you look here, you might only see that the changes is only ½ degree or 1 degree. So this is the important, so that you can uniformly look across the globe that how much changes are happening with respect to that location climate, so that you can quantify where the changes are maximum happening. This makes it easier to spot global warming. So if you have 1 degree warming here and if you have 5 degree warming, so you will say poles are warming more. Otherwise, you will say, oh, who cares? It's 35 and it is -35. So this is much better place. So I will just show you this thing. This is the real 95 to 24 picture. And if you look here,
the maximum warming is happening in the polar regions or into the mountainous regions. The maximum warming is happening in these areas, and that is the bigger concern because they controls our heat budget. Climate change is occurring because we are changing the heat budget of the Earth system in the Earth atmosphere. And if we make these changes, I will talk more on down the line. These changes, they will affect significantly our system. And normally I will skip, most of you know these things. So there is one more thing which I usually like to show this kind of slides, because a lot of politicians, bigger people, or even some scientists also, they sometimes start looking into small sector. As I said, climate is 30 years. When you're talking about climate, at least 30 years data you should use. People like Trump or some other these kind of people who uses a small phase, like you can say, oh, there is no change. Then they will plot 10 years, 5 years of data, and even you can say, okay, it looks like it is decreasing. So if you should not look into into a smaller data size, sample size, you should always look into at least 30 years of data. Then only you can decide whether it is an increasing trend or it is a decreasing trend or it is a neutral trend. Then only you can make any climate statement. So this is very clear. So sometimes a lot of people who has to do with economics, they play around these kind of things. And this is one of the highly cited figure representing climate signals, the CO2 warming levels from 1958 to present, and clearly the concentration of CO2 in the atmosphere is increasing significantly. And when you integrate the CO2 with the temperatures, they go very well hand to hand. No? So this is temperature rise, and this is the CO2 rise. They go 1 to 1. Then there is another very important point or very interesting point. COP30 is scheduled soon in Belém, so Argentina. So where we are talking about keeping our global temperature by 1.5 degrees centigrade. Why 1.5 degrees centigrade? Nah. So and this all depends, temperature is directly proportional to CO2 concentration, if you remember the previous slide. And if you see, this is the observational plot where we are seeing we have already reached 1.4 degree global warming has reached in September 2025, means 2 months before. And by May 2029, we will reach global temperature warming level to 1.5 degrees centigrade. This is the target which we have kept for end of century. Means the allocated quota for ejecting the carbon into the atmosphere, it will be over by May 2029. So this is the amount of CO2 which we are supposed to eject into the system, is 400 to 500 gigaton by the end of this century, which we will be almost reaching 400 to 500 gigaton is 2023. Almost we have reached here. So whatever else we are doing, injecting after 30s or so, this is going to add for the warming. So we are not going to stay at 1.5 degree. We are very likely we will go around 3 to 3.5 degrees centigrade. Now let's look into a little bit more into the within the climate system. So how does this warming and all works into our atmosphere? So there is one word, albedo. I'm sure a lot of you know this word, which is simply it shows the reflectance of any object. So what this object is, the fraction of light that is reflected by a body of a surface. If the body is white or gray, it will reflect more. If it is a black surface, then it will absorb more. That's as simple as it is. We all know this. And if you look into the nature, then the mountains and all reflects 50 to 90%. Clouds also reflect 20 to 30%. Thick clouds, 70, 80%. Water largely act as the black bodies most of the time, unless your rays are going slant in the northern very high latitudes, then only a lot of things get reflected, but mostly water acts as the black body or your different surface. We paint our houses with white color to avoid more light penetrating to our rooms.
That's the reason why paint our things into work. And a darker roof, more light is absorbed and goes into the system. I always ask in my class that, or at least whenever I give any public lecture also, why do we feel cold on mountains? Technically, we are going close to sun, even though it hardly matters. We are billions of billions, so such a large distance. It hardly matters 5 kilometers, 6 kilometers. But what it matters is that we are going close. We are not going far. Even we are going in decimal. So we know that temperature in the lower atmosphere decreases with height. In the stratosphere, which is 20 to 50 kilometer, a lot of ozone is there, which forms and protect us, because if this ozone layer is not there, life on Earth is not possible. All the UV radiation will come and skin cancer will be very, very common here. So it will be difficult to survive. However, ozone is other way around. When it is on the lower atmosphere, it is very harmful for us. Now, the point is that if we are receiving at the top of atmosphere 100 units of energy, then how much energy should go out of the system? Technically, if we are receiving 100 units at the top of the atmosphere, 100 units should go out of the atmosphere. Otherwise, what will happen? Either that your lower atmosphere will become warmer or cooler over a period of time. We should not think on human life cycle things. We should think on the geological time scale. Earth has a life cycle of millions and billions of years. So even if you're trapping 0.00001 degree or something like this, if you multiply by some million number, then your temperature rise will be very high. However, the global temperature rise still is 1.4 degrees only. So this balance has to be maintained. Of course, rate of coming, rate of going is very different and all those things. So if there are methods to some simply basic Stephen-Boltzmann law or the other methods where you can calculate these numbers, and largely we receive 342 watt per meter square of energy at the top of atmosphere. A lot of things get reflected back. Around 30% is reflected back and 70% is absorbed by the Earth. So this 30% is reflected back is the kind of albedo is the of the Earth or the atmosphere, you can say. So the 30% is reflected. So the albedo or the reflectance of the atmosphere and Earth is 30%. But now let's look into the atmosphere. We all know these numbers very well. Let's just revisit them. The carbon dioxide, now the composition of atmosphere is nitrogen is 78%, oxygen is 21%, and argon is 1%. So if you technically look this, 100% is done. But of course, these numbers are in decimal, so slightly some numbers are left. What is that numbers? So this number is just 0.043%. So 0.043%, very small number in the atmosphere, belongs to other gases. In that 0.043%, 0.040 or 0.041% is carbon dioxide. So apart from nitrogen, oxygen, and argon, the major chunk of gas which exists in atmosphere is carbon dioxide. However, its concentration is very, 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 very less. But still, it is very potent. Let's look a little bit more into these things. So this is if you look into the electromagnetic spectrum of any greenhouse of the sun radiation. So the incoming solar radiation which is coming is this is short wave, this is visible range, and this is long wave to ultra long wave infrared radiation. So if you look, this incoming solar radiation is totally transparent to nitrogen, and it absorbs a lot of oxygen and O3. That is in the stratosphere. If you remember the previous plot I have shown, where maximum oxygen and O3 shown. And then carbon dioxide, CO2 is also transparent, water vapor is also transparent, methane is again becoming an important gas which is not listed here, is also transparent. But when this
come and the 70%, 30%, if you remember, is already reflected back. The 70% which will get absorbed in the lower atmosphere by the Earth and re-radiate in the long wave radiation or infrared radiation, then different channels becomes active. Water vapor channel, you see the different channels, they start absorbing these radiations. And everything it get absorbed. This is the atmospheric window where whatever is emitted in this micron, it is all is gone out. So the interesting point is that the moment the Earth is transparent or opaque to the incoming solar radiation, but the moment it starts radiating as an infrared radiation, different greenhouse gas bandwidths becomes active and they start creating warming effect on the system. And that is why in the troposphere, the atmosphere is heated from the bottom rather than from the top. And that's why when you go on the mountain, you feel cold. People will say density कम हो जाएगा, air कम हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, but there is a physics behind it. What is the reason for these things? And जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ऑफ ओस कम होगी, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो. So this is simply this is what I have talked about. This is our greenhouse effect. So the radiation comes into the system, it absorbs, and when it reaches to the Earth system, some energy is reflected back to the space, some is absorbed and re-radiated, then it starts warming the system and creating the greenhouse effect on the lower atmosphere. If we look into the greenhouse gases, so these gases are, if we look the carbon dioxide with sorry. So this anthropogenic activities which we do, fossil fuel industrial activities, is around 65%, and naturally it is 11%. So 75% is carbon dioxide into the system, and then we have methane 16%, nitrous oxide, and some other trace gases. And there is another word which comes like global warming potential. So what does this mean? So because carbon dioxide is abundant, and they are the and if you remember abundant, then it is again relative word. It is 425 ppm. So every 1 lakh of air molecule particle, खाली 425 पार्टिकल जो हैं या मॉलिक्यूल जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं 10 लाख में. So this is very small number, but this is small, it is very has a lot of potential to absorb heat. When you look into, then this happened, and then there was a discussion that how to quantify other gases. So then carbon dioxide is kept as a base. With respect to carbon dioxide, let's say 1 kg हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और 1 kg मीथेन को ले सकते हैं, और दोनों को अगर हम लेके अगर उसका हीट मेजर करें कि उसकी वजह से कितनी वार्मिंग आ रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन की जो अभी रिसेंट वो एक ओल्ड स्टडी है, अभी जो रिसेंट भी मतलब 10 साल पहले जो है 28 गुना ज्यादा है. मतलब क्या है कि अगर हम एक kg मीथेन और 1 kg कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन CH4 जो है 28 गुना ज्यादा वार्मिंग पैदा करेगी उस रेस्पिरेट में. एंड ऑफ कोर्स this is there are other gases which has 29,000 20,000 लाइफ साइकिल, बट उनका नंबर बहुत ही छोटा है, जिसलिए हम अभी उनके लिए कंसर्न नहीं है. लेकिन मीथेन के साथ प्रॉब्लम यह है कि विद ग्लोबल वार्मिंग देयर इज लॉट ऑफ परमाफ्रॉस्ट जो सॉइल में और स्नो में आइस है या स्नो आइस है लार्जली जो भी है, वो सब मेल्ट हो रहे हैं. उनकी वजह से परमाफ्रॉस्ट थाइंग की वजह से बहुत ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम में रिलीज हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली साइबेरिया रीजन एंड ऑल दोस प्लेसेस. हम CO2 को लेके इतना कंसर्न क्यों है? क्योंकि CO2 का अगर हम लास्ट 8 लाख साल का अगर हिस्ट्री देखें, ये डिफरेंट मेथड्स हम उतना पीछे जा सकते हैं, तो CO2 जो है पिछले 8 लाख साल में, अगर खाली आप ये 1950 यहाँ पे आता है, 1950 से अगर आप देखें, ये कभी भी पिछले 8 लाख साल में CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो 280-300 से नीचे रहा है.
ये पहली बार ऐसा है जो 450 के आसपास पहुंच गया, जो 425 के आसपास पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। उसकी वजह से ही हमारे क्लाइमेट सिस्टम में एक इम्बैलेंस आ रहा है। इफ यू रिमेंबर कि अगर हमने कहा था कि टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे 100 यूनिट अगर आ रहा है तो 100 यूनिट जाना चाहिए, लेकिन अब ये इम्बैलेंस होने की वजह से, एक्स्ट्रा हीट ट्रैप होने की वजह से जो हमारा 100 यूनिट आ रहा है वो 100 यूनिट जा नहीं रहा है। अब वो नहीं जा रहा है तो कम जा रहा है, तो एक वार्मिंग इफेक्ट पैदा कर रहा है। एक अगर आप CO2 की लाइफ साइकिल देखें, आई विल प्रॉब्ली स्किप दिस थिंग। ये क्लियरली विथ जो US में मैक्सिमम इसका सिग्नल आता है CO2 का, यूरोप में आता है, एशिया, इंडिया, चाइना में आता है, और यही लोग सबसे ज्यादा करते हैं। ये इनकी एक लाइफ साइकिल है। ये maybe I will just use this to show this actually, if I can. Now cleaning is happening. Yeah. So what is message is gone. So the point is that carbon dioxide is a greenhouse gas. This is clear to us. The problem is the life of carbon dioxide is around 100 to 200 years, even more in some cases. So when it is ejected in wherever, let's say it is ejected in India or in US or in Europe, it will go and mix with the large scale weather patterns and mix with the general circulation and make a homogeneous carbon concentration, CO2 concentration across the globe. And that is the problem. That's why everyone wants to control the carbon dioxide. And we should be also very careful between climate change and air pollution. Air pollution is a local problem. It has, within quotes,
has nothing too much to do with the climate change. Yeah, if Delhi is polluted, it has nothing to do with climate change. If outskirts where the industry is there, we cannot breathe. Has nothing to do with climate change. But climate change is a large scale system. It hardly matters whether you are injecting in Bhopal or in US, the impact will be same, and it is a well mixed gas. So impact is across the globe. I thought that there are so many feedbacks which occurs. One, I already told about monsoon, and most important effect is the snow ice albedo effect. So it's very simple. Just to this cartoon, it will be much more clear and very interesting as well. So if you have a snow, let's say we are in northern hemisphere somewhere in the sea ice, everything is covered by the let's say an Atlantic Ocean or wherever we are, is covered with the ice. Then the radiation which comes, its pollution level is very less. Whatever comes is reflected back into the atmosphere. So very less amount of energy is going into the ocean. But if you increase the carbon dioxide into the atmosphere in that area, because it's a well-mixed gas, so it will start affecting melting in these areas as well, which is, I've already shown you that the maximum warming is happening in polar regions. So this will open this system. So now you are reflecting 90%, which is going out of the system. Now you are absorbing and absorbing only 10%. But in this case, when you will open this system, you are only reflecting 6-7%. 90% you are absorbing 95%. And that's a huge amount of energy which is getting stored into our system. And we are changing the albedo by 1% to 1.35%, which is a very large number actually. So this is what is, and the same, if you remember, I said the warming is happening into the mountainous region and into the polar region. Why mountainous region? Again, the mountainous region, the same logic. The glaciers and snow, they are either snow is coming less or glaciers are melting. So the mountains are black. If they are white, they reflect more. If they're black, they absorb more. And that's why the warming is more. And that's why if you have heard elevation dependent warming, the more and more elevation you go, more and more warming is happening in the Himalayas, anywhere in the globe if you go. So these kind of feedbacks, it happens into the climate system. So this is again a picture this is the top of atmosphere. We are looking into the radiative forcing. The radiative forcing is simply the balance between the incoming radiation and outgoing radiation, which we call it as a radiative forcing, radiation की forcing. अगर हम इसको देखें तो 1975 अभी एक और बोलना चाहिए, जो क्लाइमेट चेंज, जो प्रेजेंट क्लाइमेट चेंज है, जिसको लेके हम इतना कंसर्न है, वो 1750 उसका बेस माना जाता है. ये मॉडर्न क्लाइमेट चेंज है. प्रीवियस क्लाइमेट चेंज, पेलियो क्लाइमेट एंड ऑल दोस थिंग्स आर वी आर नॉट मच कंसर्न अबाउट इट. व्हाट वी आर कंसर्न इज दैट 1715 का जो हमारा स्टेटस था, उससे हम कितना चेंज हुए. उसके बाद एग्रीकल्चर रीजन था ये, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया 1850 में, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो जब हमारा टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पे 0 था, बैलेंस था, लेकिन with time into 1950 में there was an imbalance of around 0.57 watt per meter square. 1980 में around 1.25, 2.29. अब ये नंबर 2024 या 5 में 2.95, around 3 watt per meter square के आसपास हो गया. So this is the imbalance. Imbalance is what we call it as a radiative forcing or climate forcing. So this is the radiative forcing or climate forcing, which is affecting the climate system. Now coming to the how do we address this climate? So this is what I have shown. बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टेक्निकल बात नहीं करना है यहाँ पे. Only I have already talked about climate model. ये different processes हैं, different grids पे ये run होते हैं. Ocean में 50 लेयर होगी, atmosphere में 50 लेयर होगी. तो क्लाइमेट मॉडल बेसिकली क्या है? ये एक पॉलिसी टूल है फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडी के लिए.
और इसके लिए ट्रिलियंस। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है जो मैं दिखाना चाहूंगा, और मैं ऑलवेज यूज टू शो दिस थिंग, कि जो नोबेल प्राइज 2021 का मिला था वो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था क्लाइमेट चेंज में काम करने के लिए, जिसमें सुकियो मानाबे एंड क्लास हसलमैन, ये क्लाउस हसलमैन मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट हैम्बर्ग में जर्मनी से हैं। तो मैंने इनके साथ काम किया है 7-8 साल। तो ये इन्होंने बेसिकली इन्होंने क्या डेवलप किया था, फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग द वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टिंग द ग्लोबल वार्मिंग। बहुत सिंपल रिलेशनशिप दिया था जो इन्होंने 90s में दिया था, वो बहुत सिंपल रिलेशनशिप। अब तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स हो गए, अब सारे आ गए, लेकिन उस बेसिक कंसेप्ट को फ्लोट करने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था जब ये 78-80 ईयर्स के हो गए थे। इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो CO2 कंसंट्रेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। प्रेसिपिटेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो लार्जली हमारे पास प्रेसिपिटेशन जो है वो बढ़ रहा है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी हरा है कभी ब्राउन है, मतलब कि कम ज्यादा रहता है। ग्लेशियर हम कंटिन्यूअसली लूज कर रहे हैं, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, सी लेवल राइज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ओशन में हीट कंटेंट बढ़ रहा है। ये सारे ही निगेटिव पैरामीटर है, मतलब हम वार्मिंग की तरफ बहुत स्ट्रांगली मूव कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन था जो कि 1.5 डिग्री 2 डिग्री एंड ऑल विच वी टॉक अबाउट ऑलवेज, क्यों नहीं 4 डिग्री 3 डिग्री या 1.5 डिग्री या 1 डिग्री। तो इसमें अगर हम देखें, ये बड़ा ऑफ कोर्स यही एक ओनली कारण नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और जो मैं एक बार दो बार पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, जो कि 2-3 चीजें क्लाइमेट चेंज के रेस्पेक्ट में हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि ये ह्यूमन लाइफ साइकिल से इसका कोई लेना देना नहीं है। और हम सब कुछ सोचते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस रेस में। तो अगर आप देखें तो ये टेम्परेचर का रिकॉर्ड है, बहुत पुराने से लिया हुआ है, और तो अगर हम देखें कितना मिलियन किलो मिलियन ईयर्स में भी अगर हम पीछे जाएं तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये टेम्परेचर इस रेंज में आया हो जो कि 1.5 के ऊपर चला गया हो। लेकिन पास्ट में एक बार गया है, जो कि ये ऑब्वियसली इस टाइम पे तो अर्थ गर्म थी और सेटल हो रही थी एंड ऑल दोस थिंग्स, लेकिन ये एरिया में जब गया, जब ये यहाँ पे था, तो इसको एटलीस्ट कई मिलियन ईयर हैं। जब ये छोटा सा जो एरिया है, ये कई मिलियन ईयर है, इतने मिलियन ईयर लग गए इसको खाली एक बार उस विंडो से नीचे वाली विंडो में आने में। तो अगर आप एक बार इस विंडो में चले गए तो आप इतना वहां से नीचे आने में मिलियन ईयर्स लग जा रहे हैं। हम खुद भी अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इवन अभी कंसेंसस नहीं है कि क्या होगा, अर्थ का कैसे इवॉल्व करेगी, और क्या होगा एक्सट्रीम्स का। एक्सट्रीम्स अभी बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन अभी भी एक्सट्रीम्स का प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेटली हम लोग नहीं कर पाते हैं। खाली लार्ज स्केल सिस्टम साइक्लोन वगैरह का प्रिडिक्शन कर पाते हैं। अभी भी हमको क्लाउड बस्ट हो रहा है, एवलांच हो रहा है, फ्लैश फ्लड आ रहा है, बहुत मुश्किल होता है इसका प्रोडिक्शन करना, कि अभी अभी बहुत मुश्किल है। और ये तो और अब आजकल लेकिन कंपाउंड एक्सट्रीम्स आ गए, एक एक्सट्रीम दूसरे एक्सट्रीम को ट्रिगर कर रहा है। वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अगर हम 1.5 या 2 डिग्री के ऊपर गए, और हम जाएंगे जाएंगे, वहां रुक नहीं सकते। ये डिफरेंट एक्सट्रीम्स हैं जो हमको दिख रही हैं। एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम फॉरेस्ट फायर भी है। बेसिकली एक्सट्रीम्स में हम अगर बात करें तो एक्सट्रीम्स में होता क्या है, हमारी लेट्स से ये एक करंट क्लाइमेट है। करंट क्लाइमेट का मतलब कि हम यहाँ, हमारा कोई डेटा है, लेट्स से हम दिल्ली का डेटा ले लिए, उसमें विंटर का भी डेटा होगा, समर का भी डेटा होगा, और अक्टूबर और मार्च का भी डेटा होगा। तो विंटर वाला डेटा यहाँ होगा क्योंकि ये कोल्ड होगा, समर वाला डेटा यहाँ होगा क्योंकि ये वार्म होगा, बीच में बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक होमोजेनियस काइंड ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ये। लेकिन जब हम वार्म कर रहे हैं सिस्टम को, तो लेट्स से अगर हम यहाँ पे थे तो हमारा लेट्स से दिसंबर जनवरी या जनवरी फरवरी में जो हमारा कोल्ड डे का जो डेफिनेशन था, कि हम कहते थे कि जब हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे जाएगा तो हम इसको कोल्ड डे बोलेंगे, और ये यहाँ से शुरू होता है, लेट्स से 20 से 10 डिग्री तक है ये। अब क्या हो रहा है कि हम वार्मिंग सिस्टम में चले गए, जहां ये 20 डिग्री का जो टेम्परेचर था वो पहले आ ही नहीं रहा है। नाउ वी आर इन ए एरा वेयर वी हैव टू चेंज आवर डेफिनेशन ऑफ कोल्ड डेज। नाउ द कोल्ड डेज का डेफिनेशन हमको चेंज करके करना पड़ेगा कि अब 25 डिग्री के नीचे है
तो हम उसको एज ए कोल्ड डे मानेंगे, या मॉडरेट कोल्ड डे मानेंगे, जो भी माने। और वार्म डे जो पहले हमारे पास इतना थोड़ा सा हुआ करता था, अब इतना ज्यादा हो गया, और एक्सट्रीम हॉट भी आने लगे, जो कि पहले 40-42 पे ही रुक जाता था, अब 45-48-50 पे भी आने लगा। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये एक बहुत बेसिक सिंपल इलिस्ट्रेशन है। इसके बहुत सारे हैं, मीन बढ़ेगा, वेरिएंस बढ़ेगा, मीन वेरिएंस दोनों बढ़ेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस है जिसमें इसको दिखाया जाएगा। हम लोग साउथ एशिया में रहते हैं, हमको क्यों इसके लिए कंसर्न होना चाहिए? क्योंकि साउथ एशिया एक ऐसा रीजन है पूरे ग्लोब में जहां पे एक्सट्रीम्स का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। ये एक ग्लोबल स्टडी है जो कि आईपीसीसी के ही थ्रू ये भी आई है, 12 में आई है, और अभी रिसेंट जो आई है वो भी मैं भी दिखाता हूँ अगले स्लाइड में। क्या दिखा रहा है ये? कि पूरे ग्लोब में सब जगह ये क्या है, ये आपको फिजिकल एक्सपोजर टू फ्लड्स, फिजिकल एक्सपोजर टू साइक्लोन्स, डिजास्टर एंड डैमेज, कितना लॉस होगा, और सी लेवल राइज कितना होगा, ये 4 प्लॉट्स हैं यहाँ पे। अगर आप देखें, ये जो नंबर्स हैं ये 70s में है, ये 2030 में है। ये सबसे बड़े नंबर्स जो है वो एशिया पे हैं, सब जगह छोटे हैं। यहाँ बहुत ही थोड़ा सा चेंज होने वाला है, यूरोप में, अफ्रीका में थोड़ा बड़ा चेंज होगा, लेकिन नंबर्स हमारे बहुत बड़े हैं। इनके 3000-4000 में, हमारे 80,000 में है। और ये एशिया में अगर हम साइक्लोन्स देखें, और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारा अरेबियन सी, जो कि पैसिव ओशन था, जिसमें कि साइक्लोन नहीं आते थे या बहुत कम आते थे, वो लैंडलॉक होने की वजह से, वार्मिंग की वजह से बहुत तेजी से वार्म हो रहा है। और अगर हमारा बे ऑफ बंगाल की तरह अरेबियन सी में भी यहाँ पास साइक्लोन आने लगे, तो हमारा एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगा, क्योंकि वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इवन फरवरी, मार्च, इन सब सीजन्स में अनइवन साइक्लोन्स आएंगे, और वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को सिग्निफिकेंटली प्रभावित करेंगे। एक्सट्रीम रेनफॉल्स पे भी हो, फ्लड का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इवन सी लेवल राइज भी सबसे ज्यादा इसी एरिया में है। तो कंसर्न क्या है कि हम उस पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां पे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम का इम्पैक्ट आने वाला है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। अब एक स्टडी रिसेंट AR6 रिपोर्ट में है कि जो सी लेवल राइज है, ये खाली शायद एक ही स्लाइड है हमारे पास इसकी, कि सी लेवल राइज जो है वो आप अगर देखें तो डिफरेंट ग्लोब्स के सिटीज को दिखा रखा है ये, जहां पे बढ़ेगा, और ये बता रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी एटलीस्ट 2 to 3 feet of coastal area of India, several mega cities will be severely affected. Chennai, Visakhapatnam, Kochi, Bombay, and Porbandar. These all are large scale, our economic settlements are there. Huge amount of population and rich settlements are there. And they all need to be taken care of. A lot of population have to migrate because if this warming happens, and this is warming like anything. So this is again a very big challenge. Whatever was shown here in terms of sea level rise and all those things, this is going to significantly affect in the recent reports as well. It's clearly visible. And Maldives will be gone by 2050. They're already started buying land. Bangladesh has a lot of problem there, a lot of tributaries here. They will be also getting a lot of affected with this warming. A very interesting slide, since ages I am showing this slide, and this is very true for our part of world as well. Global vulnerability for climate change. कौन सबसे ज्यादा CO2 का emission कर रहा है? और इस ऑडियंस में मैं जानता हूं सबको पता होगा कौन सबसे ज्यादा इमिशन कर रहा है। सबसे ज्यादा इमिशन डेवलपिंग कंट्री कर रही है। आप सब जगह देखें, हाईएस्ट इमिशंस इनके द्वारा किया जा रहा है, और ये हाईएस्ट इमिशंस हैं इनके। और इनके इमिशंस, नाउ वी रिमेंबर दैट क्लाइमेट चेंज इज ए ग्लोबल सिस्टम बिकॉज ऑफ वार्मिंग, CO2 एंड ऑल वेल मिक्स। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ पे हो रहा है? कौन लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं? जो हाईली वर्नेबल है वो कौन लोग हैं? अफ्रीका, एशिया, है ना, and South America. So these are the people who are going to be maximum affected, and these are the people, इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि the impact of climate change becomes significant and more severe when it is integrated with non-climatic factors, जो कि हमारे यहाँ बहुत strong है, such as poverty, unequal access to resources, social inequality, inadequate infrastructure. इनके यहाँ सारी चीजों का ये access है. So they don't get affected by these changes. And we do get affected significantly. So this is very important to be aware of. Of course, there are a lot of global initiatives. COP meeting is still going to happen soon in Belém in Argentina, and then a lot of people who talks about these things and all. So Paris Agreement is done, but US has walked out. है ना? तो अब डोनाल्ड ट्रम्प वो करना नहीं चाहता. He is doing all those things. Even he's shutting down all the big labs in the US who monitors. He's also asking to shut this satellite which measures CO2 and all those things. So he's taking all the negative steps to global climate change के जो signals हैं उसको suppress करने के लिए. So I think I will stop here. So I will summarize it. Is the climate change? I will just make some statements. It's not very. I'm sure you all know this. Is the climate change and climate variability are same? No. Climate change is a different scale phenomena. Climate variability is a different scale system. Are humans are responsible? For sure, yes. Can we address the climate change problem? Yes. Is present climate change natural process? No. A lot of people argue कि तो natural हो सकता है. Natural और anthropogenic का already वो energy imbalance से हमने कोशिश किया है उसको address करने की. Is there anything that we can do about climate change? For sure, yes. Are these climate projections reliable? Yes. So climate projections जो मैंने बात नहीं की, basically हम लोग climate projections करने के लिए, क्योंकि आज तक का तो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल डेटा सेट है, हम सब कुछ बात कर सकते हैं. फ्यूचर की बात करने के लिए हमें मॉडल्स चाहिए और मॉडल को रन करने के लिए फोर्सिंग चाहिए. और वो फोर्सिंग हम लोग डिफरेंट सोशल साइंटिस्ट लार्जली बनाते हैं कि क्या कहते हैं किस फैशन में ग्लोब इवॉल्व करेगा. लेट्स से हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेंगे लेकिन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज भी लेके आएंगे, या हम ऐसा करेंगे कि भाई हमारे वर्ल्ड यूरोप के पास तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है वो हमको दे नहीं रहा है तो वी डोंट केयर. हमारे पास बिलियंस ऑफ पीपल हैं, हम उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेंगे. आई डोंट केयर, आई विल डू बिजनेस एज यूजुअल और हम मारुति कार ही चलाएंगे. तो based on these kind of storylines, different scenarios are developed. 4-5 scenarios, largely 5. अभी इस समय जो IPCC रिपोर्ट आई है उसमें ऐसे सिनेरियोज है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड रेडिएटिव इम्बैलेंस दोनों को ध्यान में रखा गया है. तो उस बेसिस पे उस तरह से अगर वर्ल्ड मूव करेगा बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन एंड द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एंड ऑल दोस थिंग्स, वो कितना ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करेगा, वो सब चीजों को ध्यान में रख के वो चीजें एक फोर्सिंग्स हम लोग बनाते हैं, जैसे क्लाइमेट forcing to run their future simulations. Is the extreme weather tied with the climate change? For sure, yes. Is there nothing we can do about it? No. And in simple words, we can do a lot of things. We can save energy, we can plant trees, we can recycle, tell others. Small actions can make difference when everyone works together. Biggest culprit is in energy sector. Maximum CO2, they are coal, maximum 70% energy is coming from coal industry. And they are the largest contributor to these kind of gases. If we switch off the light 1 minute, we are saving a lot of energy. And that has affecting the power generation. So planting tree, of course, they are the main carbon sink regions. Better recycled products we should use. So there are so many things. We all know these things. Only this is that we am just again pointing out so that we can really think and try to gauge those things. And of course, agriculture sector is very much getting affected with these changes. So I will stop here, and I thank you, and I'm open to the questions if any. बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब. जलवायु परिवर्तन जो आज के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है
और मैं कह सकता हूं कि कृषि तंत्र के लिए और कृषि के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इवन जलवायु परिवर्तन के कारण हम बता सकते हैं कि देश में अनेकों किसान आज आत्मदाह कर रहे हैं, और उसकी जो सांख्यिकीय विश्लेषण और उसकी परिगणना और उसके तत्वों को जो आपने सामने रखा है, इवन भारत की नहीं, इवन वैश्विक चर्चा की है आपने, तो मैं कहूंगा कि वाकई में क्लाइमेट चेंज या जलवायु विषयों पर एक इससे बेहतर कोई टॉक नहीं हो सकती। आपने सारे सूक्ष्म तत्वों को सामने रखा, उनकी परिगणना डेटा के साथ आपने बात करी, इवन भारतीय परिवेश के नहीं, इवन समग्र विश्व को आपने इसमें समाहित किया। तो बड़ी अच्छी बात लगी कि पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ और इतनी बौद्धिक परिचर्चा आपने करी। तो सारे पॉइंट्स को तो जमीनी स्तर पर आपने दिखाया ही, और लेक्चर अपने आप में बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। फिर भी हमारे जो साइंटिस्ट, हमारे जो फैकल्टी, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यदि आपको कहीं लगता है कि इस पर्टिकुलर पीपीटी में कोई क्रॉस क्वेश्चन है या आपके करिकुलम में कोई क्रॉस क्वेश्चन है, इस तरीके का कुछ है, तो 15 मिनट के लिए चैट बॉक्स ओपन है, आप अपनी बात को यहां लिख सकते हैं और जो हमारी पर्सनल सेक्रेटरी है उसको पढ़ तक सर को पहुंचाएंगी, तो आपके क्वेश्चन का निवारण होगा। स्वागत है सभी का। कुछ लोगों ने हाथ भी खड़ा कर रखा है। जी, चैट बॉक्स को ओपन कर दीजिए एडमिन महोदय। Done, sir. Done, done. ठीक है, बाकी विषय वस्तु पे यदि कोई बोलना चाहे राजनीति को छोड़ के, वो बोल सकता है, उसको आप अनुमति दे दीजिए म्यूट करके। Yes, sir. Participants can unmute themselves and like if they have an issue, they can one-to-one like do conversation with the sir. एक महोदय ने लिखा है कि कैन वी गेट पीपीटी सर, इस पे सर का पूरा अधिकार है, मैं निवेदन कर सकता हूं बस। For sure, I will. ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। Is anyone बाकी having इसका any kind of doubt? Please unmute yourself or you can type your query also. Virendra This is a Gautav, 15 Vinita, minutes doubt clearing Oops. session. Someone has written something. How livestock are responsible for increase in climate change? That is also a very interesting question actually. So now they are having, because of this livestock largely methane emissions करते हैं, जो हमारे I don't know livestock को मैं largely I would say methane emissions पे हो जाते हैं, इसकी वजह से वो उसको responsible बोलेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, नेक्स्ट प्लीज। एंथ्रोपोस्फियर इज समथिंग लाइक दैट। हमने एक्चुअली, आपको अगर याद हो तो हमने बोला जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम रहते हैं। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अभी जो हम जिस एरा में रह रहे हैं उसको होलोसीन एरा कहते हैं, और वो लगभग 8 साल से वो एरा में हम लोग अभी जो करंट हमारा सेटअप है वो है। लेकिन एक कंसेंसस है साइंटिस्टों के बीच में कि अब हमने अर्थ का जो कंपोजिशन है वो 1750 से ही चेंज करना स्टार्ट कर दिया, जब हमने फॉरेस्ट काट के एग्रीकल्चर ग्लोबल स्केल पे शुरू किया, और हमने फिर रिलेटिव इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू किया। फिर 1850 में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन पे चले गए, जहाँ तो बहुत ही ज्यादा हमने इंजेक्ट कर दिया CO2 एंड ऑल, और अभी उसका जो उन्होंने किया है यूरोप ने, वेस्ट ने, उसका दंड हम लोगों को मिल रहा है। पॉइंट क्या था कि एक कंसेंसस हो गया सिस्टम में कि हमने इतना सिस्टम को इवॉल्व कर दिया। अगर आप ध्यान दें, अगर हम जितना सीमेंट हमने बना लिया है, अगर हम सारा सीमेंट पिघला के दोबारा अर्थ के ऊपर डाल दें तो लगभग 1-1.5 मीटर की परत बन जाएगी पूरे अर्थ की। इतना सीमेंट हमने बना दिया। स्टील नाम का तत्व तो पहले था नहीं। अगर आप सोचें क्लाइमेट चेंज, एंथ्रोपोसीन का अगर आप कहें एग्जाम्पल दीजिए, तो हम आपको एग्जाम्पल देंगे कि जो भी चीज आपके सामने दिख रही है, सुई से लेके हवाई जहाज तक, ये सारा आपने इसी अर्थ से निकाला हुआ है। कहीं से आप लेके नहीं आए हैं, मार्स से या प्लूटो से। सारा चीज आपने रिसाइकिल किया है, अपने साइंस को इवॉल्व किया है, और उससे आपने
डिफरेंट एसेट्स बनाए हुए हैं, चाहे आपका पेन, पेंसिल, टीवी, फ्रिज, कपड़ा, लता, सब एवरीथिंग इज ए मार्क ऑफ सिविलाइजेशन. एंड दिस इज व्हाट is has become significantly visible after 50s, 60s and all. तो अब हम ये कह रहे हैं कि उस एरा से हम लिटरली एक नए एरा में चले गए हैं, जो कि एंथ्रोपोस्फियर या एंथ्रोपोसीन एरा, या हम जिसको एक बहुत कॉमन लैंग्वेज हो गया एंथ्रोपोसीन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी. तो ब्रॉडली इस तरह मैं इस तरह आपको एड्रेस कर सकता हूँ. What might be the most understudied feedback mechanism in the Earth system? That is the cloud microphysics. क्लाउड के बारे में अभी भी हमारी समझ बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि क्लाउड माइक्रोफिजिक्स में अभी अगर आप हमको 200 पीएचडी स्टूडेंट दे देंगे तो भी कम है, और उन 200 को हम पीएचडी करा पाएंगे ये भी एक चैलेंज है, हमारा नॉलेज भी लिमिटेड है. तो ये ग्लोबल स्केल पे एक तो एक्सपर्टीज का लिमिटेशन है, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग का भी डिफरेंस है. तो जो सबसे बड़ा कल्प्रिट इस समय सिस्टम मॉडल्स में है क्लाउड माइक्रोफिजिक्स. Can in what way we can regenerative agriculture and soil health management serve as effective climate change mitigation tools for small and marginal farmers? अच्छा, ये क्वेश्चन सुरेखा जी का है, जो कि मैं इसके लिए तो मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ आंसर देने के लिए ये वाला, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ तो बेसिकली सॉइल हेल्थ के लिए आपको क्रॉप साइकिल वगैरह को देखना चाहिए कि उसको रिपीट वगैरह ना करें, और मिटिगेशन टूल की जगह अडाप्टेशन पे जाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मिटिगेशन में रिसोर्सेज ज़्यादा लग जाते हैं, वो गवर्नमेंट लेवल पे ही ठीक रहता है. अडाप्टेशन में अगर हम जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मार्जिनल फार्मर्स एंड ऑल अडाप्टेशन में ही ज़्यादा जा पाएंगे. लेकिन मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पे बोलने के लिए. वेरी सर, ह्यूमंस आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज? विदाउट ए डाउट यस. आप अगर आर्गुमेंट है तो मुझे लिख सकते हैं, मैं उस पर कोशिश करूंगा उसको एड्रेस करने की. इन व्हाट वे कैन वी रीजनरेट एग्रीकल्चर? नहीं, ये हो गया. हाउ कैन द राइस कल्टीवेशन इन्फ्लुएंस कार्बन climate change? Rice, of course, a lot of CO2 is, sorry, CH4 comes out of it. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस समय जो है वो CO2 से ज्यादा अब का CH4 का हो गया है, क्योंकि CH4 का मीथेन का, और वो राइस से सबसे ज्यादा है. राइस और इवन जो हमारे एनिमल्स हैं जो एयर पास करते हैं या जो और चीजें उनकी हैं, वो बहुत ज्यादा CH4 का वहां से. और हमारा आपने देखा 24% ऑफ ग्लोबल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन लिव्स इन आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, एंड दैट्स डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू CH4. नंदिनी, आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए, आप पढ़ दीजिए क्वेश्चन. How much emission of CO2 is sustainable at individual level? Actually, CO2 level is sustainable at individual level. ये क्वेश्चन मैं पूरा समझ नहीं पाया, क्योंकि हम इंडिविजुअली ऐसा क्वांटिफिकेशन एटलीस्ट मेरे पास तो नहीं है. लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम CO2 को जिस लेवल पे अभी है 400 पे रोक ले, 450 पे रोक ले, तो एटलीस्ट हम 1.5 के नीचे रहेंगे, 1.5 पे रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है कि 50s के बाद डिक्लाइन हो, तो हमारा इमिशंस रेट कम होगा. तो हम 2021 आते आते काफी जो है हमारा नंबर्स कम होंगे. लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे यही है कि मैं नहीं बता सकता, लेकिन ग्लोबल लेवल पे अगर 400 के आसपास रोक लेते हैं इसको, जो कि संभव से भी नहीं, असंभव से भी आगे अगर कोई वर्ड है तो वो है, नहीं है, हम रोक नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतना हेलो. इंजेक्ट कर रखा है कि अभी हम यहीं पे अगर हमारे पास कोई बटन हो कि जैसे हम लैपटॉप बंद कर सकते हैं, वैसे क्या कहते हैं CO2 बंद कर दें, तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतना मोमेंटम है कि हम अभी बंद ही कर देंगे तो उसका पूरा इम्पैक्ट अभी सैकड़ों साल आएगा. हेलो, गुड इवनिंग सर. हाँ हेलो. ऋषभ, ऋषभ, हाँ प्लीज बोलिए.
Sir, I just had a question about the urbanization. Like in urban development, there is adoption of plants, like developing of highways. There are a lot of plants are incorporated. Uh, मैं ये जानना चाहता था कि ये जस्टिफाई करते हैं या इनका रोल कितना है या कितना वो मिटिगेट कर पाते हैं पॉल्यूशन को, और या इसका कोई पैरामीटर या ऐसी कोई जानकारी कि देखे वैसे हाईवे पे देखा जा रहा है टोल पे करीबन लाख सवा लाख गाड़ियां दिन भर में पास होती है, तो रोड साइड नहीं, प्लांटेशन ये इज ये इनफ टू योर जस्ट। हाँ सर, सर आपका कुछ इसमें टेक नहीं या इंफॉर्मेशन। नहीं, मैं ये अर्बन जहां भी आपने किया, आपने सिस्टम को खराब किया है। हमारा नेचर जो है वो फॉरेस्ट है, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर लैंड है, फिर हमारा रूरल एरिया है, फिर हमारा अर्बन एरिया है, और फिर हमारा मेट्रोपॉलिटन्स है। अर्बन एरिया भी मेट्रोपॉलिटन्स में ही आएगा। तो हम जैसे ही अर्बन बनाते हैं तो तुरंत ही हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे सारे वाटर टेबल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हम सारा कंक्रीट का जंगल बना दिए हैं। वाटर टेबल रिचार्ज हो नहीं रही है, पानी किसी शहर में रह नहीं गया, जो भी था वो फ्री पानी के नाम पे हमने सारा दोहन कर लिया है। तो ये तो एक दूसरे टॉपिक में मैं चला गया। पॉइंट ये है कि आप जहां अर्बनाइजेशन, जहां भी आप अर्बन सेटिंग बना रहे हैं, और आप डेफिनेटली बहुत लार्ज स्केल पे माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं। और आजकल एक नया वर्ड आ गया है, वो बिट फैंसी हम उसको बोलते हैं कि स्मार्ट सिटीज। टू सम एक्सटेंट इट इज वेरी गुड, बिकॉज दिल्ली के साथ प्रॉब्लम क्यों है इस समय, जो हम लोग अभी दिल्ली की इतनी चर्चा कर रहे हैं, उसका रीजन ये है कि वो लैंड लॉक है। लैंड लॉक इन द सेंस, आगे नॉर्थ में हिमालयाज है, और इधर से क्या है कि एक तो ठंडा है, इसी वजह से एटमॉस्फेयर बहुत बहुत सिंक है, हवा बहुत कम है, और सब पैरेलल सिस्टम खड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, तो हवा कहीं से बह ही नहीं सकती। तो जो भी कुछ है एयर मास वो वहीं रुक जाता है। यही यही वही पोल्यूशन अगर भोपाल में हमारे पास आएगा या है भी, तो वो यहाँ से एयर मास उसको लेके वॉकआउट कर जाता है। लेकिन सिटीज में क्या है, जो लैंडलॉक सिटीज हैं, जिनका सर्कुलर फ्लो जो है वो कंस्ट्रक्शन से बाधित है, तो वो सारा जो एयर मास है वो वहीं वहीं रुक जाएगा। तो जो जिसको 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे में निकल जाना चाहिए जिस एयर को, वो वहां पे 3 दिन 5 दिन रह जाती है। वो फिर क्या कहते हैं, आपके हेल्थ हैजार्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो भी आप स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं या वो कर रहे हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट ये छोटी छोटी बेसिक चीजों का ध्यान रखेंगे तो लार्ज स्केल पे एटलीस्ट इसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। बट इसका इम्पैक्ट बहुत लार्ज लेवल पर रहेगा, कम नहीं होगा। थैंक यू सर। हाउ हाउ डू वी डिस्ट्रॉय राइस स्टेबल विदाउट बर्निंग? यार ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन अब मैं जानता हूँ आईसीआर के कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट भोपाल में भी एक इंस्टीट्यूट है, वो लोग ने कुछ उससे कुछ टेबल वगैरह बना रहे हैं या कुछ चेयर्स वगैरह बना रहे हैं, वो उसको यूज कर रहे हैं। बट मैं इस पे, मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इस पे नहीं बोल पाऊंगा। The कैन next हाउ question we कैन are having, how can climate change affect our future and how can it be for used for future generation? How can climate change affect our future? Climate change is already affecting our system. So मैंने ऑलरेडी आपको एक तरह से कन्विंस करने की कोशिश की है कि हमारा टेम्परेचर जो है लगभग 1.5 डिग्री ना। एक बार, कई बार लोग जो बोलते हैं, जो मैं बार बार बोलता भी हूँ, कि जब हम सवेरे उठते हैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर, 15 डिग्री टेम्परेचर रहता है, दिन में जब जाते हैं तो 30-40 डिग्री हो जाता है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 20 डिग्री आराम से सह जाते हैं, और हम 1.5 डिग्री के लिए इतना परेशान है। तो ये सब क्या है ना, कि ये स्केल का प्रॉब्लम है। ये शॉर्ट टर्म की इज ए डिफरेंट थिंग। जब आप 1.5 डिग्री की बात कर रहे हैं, आप ग्लोबल टेम्परेचर राइज की बात कर रहे हैं। आप जहाँ पे टेम्परेचर -35 है वहां की भी बात कर रहे हैं, जहाँ टेम्परेचर +35 है वहां की भी बात कर रहे हैं, सबका मीन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और ग्लोबल टेम्परेचर जो पूरे ग्लोब का है, वो एवरेज टेम्परेचर अराउंड 15-15.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम लोग अराउंड 17 के आसपास पहुंच गए हैं ग्लोबल टेम्परेचर, जो मीन टेम्परेचर है। तो हम टेम्परेचर जो हमारा ये बढ़ रहा है, इट इज गोइंग सिंपली टू अफेक्ट एक्सट्रीम्स, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर कंसर्न अबाउट ओनली एक्सट्रीम्स, एंड एक्सट्रीम्स ऑफ ऑल टाइप, साइक्लोन्स, फ्लैश फ्लड, इवन ड्राउट्स। एक एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम है जो कि हम लोग बहुत कम नोटिस करते हैं, फॉरेस्ट फायर। यू नो दैट फॉरेस्ट फायर, बिकॉज ऑफ ड्राउट, लेस मॉइस्चर,
the area in that area is dying, and then you have a forest fire. Huge amount of your carbon sink area is washed away. और उसके अलावा वो जो जितना कार्बन उस ट्री में स्टोर था वो भी एटमॉस्फेयर में आ गया. So we do expect a lot of extremes in coming future. How soil health and climate changes are related. How? Soil health and climate change are related. मैडम ये मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अगर बहुत सिंपल तरीके से बोलना चाहूँ तो आप इन प्रिंसिपल आपको कल्टीवेशन करना चाहिए. मेरा क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा लिमिटेड है वहां पे, तो साइकिल वगैरह आपको क्रॉप साइकिल वगैरह चेंज करके लगानी चाहिए. और सॉइल हेल्थ तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप ड्राउट एरिया में अगर आप आ रहे हैं तो ड्राउट का बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा. अगर आप एक्सट्रीम रेनफॉल एरिया में आ रहे हैं तो उससे सॉइल का होगा, अपर लेयर वॉश आउट हो सकती है. तो कई सारे सिनेरियोज बन सकते हैं इन ब्रॉडर टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो. Please explain the increase in CO2 concentration in the video you have mentioned. In the Uh, CO2 concentration, actually this is simply in the video what was shown that the how much CO2 we are injecting into the atmosphere. It is happening round the clock. And the red color is why it was more in the northern hemisphere, because we have a large land mass in the northern hemisphere. If you remember southern hemisphere, it was less. It was because northern hemisphere, we have a large land mass, maximum population lives in the northern hemisphere. Southern hemisphere, Australia, New Zealand, and some South American countries. So the injection of carbon dioxide into the atmosphere is very large in the northern hemisphere, and especially US, India, China, Europe. And around the year you are doing, and they are getting well mixed into the atmosphere. But when the vegetation season comes, now vegetation, you consume a lot of CO2 for photosynthesis. So during, if you remember, I tried to speak in between also, that during your vegetation period, summer season and all, this red color was slightly green to yellowish, because a lot of CO2 was wiped away from the vegetation cycle. Then again in winter, if you in our part, it's not like that, but in Europe and all, or in higher latitudes, they shed the leaves in the winter. So that way, then the carbon sinking or cleaning is very less. And then again, the red color was there. So it was simply showing that how much we are ejecting, how it is getting well mixed, and how much it is it is getting cleaned into the system. Everyone there's- is, sir, appreciating you, and there are so many questions. We are running out of time, but I'll speak few more questions. Okay, go ahead. Um, Yeah. We have been witnessing that the climate is degrading at a very fast rate. Being an agriculturist, how can we cope with such drastic change? Mm. Actually, we a lot of people, actually government is also trying to talk about things tailored at very high resolution, so that whenever you talk about agriculture and all, we are trying to generate basic tailored information for district level to Tehsil level, so that at least people should know that what type of climate is going to be expected in that area. A lot of work is going on. Hopefully soon it will come. So if you know that, let's say you are living in an area in somewhere where it is more extreme prone area. So first you have to quantify whether it is all type of extremes you are getting, or you are getting only few types of extremes, and what are those characteristics. And then accordingly, based on those characteristics, you have to do some adaptation. Mitigation will be a bit challenge. So you have to then adapt based on the extremes, which might be
the area which you are looking at, it may be prone. चलिए, जो पार्टिसिपेंट्स की कोई और क्वेरी होगी वो हमें अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, या डॉक्टर साहब का हम ईमेल आपको दे देंगे, ठीक है? आप उनको ईमेल कर सकते हैं, और अगर वो फ्री होंगे तो आपकी क्वेरी को एड्रेस किया जाएगा, ठीक है? अगर नंदिनी कोई और क्वेश्चन क्लाइमेट से रिलेटेड है उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? I have got one question. It's very big. Sir, I Padi. read that government has recently relaxed SO2 emission norms for some thermal power plants, meaning that installation of flue gases desulfurization filters is no longer mandatory everywhere. Could you please explain the environmental implications of this decision? Is this decision correct? As thermal power plant is mainly responsible for this global warming. By Yes, so of Nandita course, Sinha. Nandita Sinha. Let me see. I missed that statement. So, okay, Nandita Sinha. Okay, relax SO2 emissions, sulfur dioxide emissions, and also something about that. Okay, of course, this will, of course, it will have a negative impact. In fact, I am not aware of this, so this decision, but my take is that, of course, this will have a negative impact. So, thermal power plant is the biggest sector for CO2 emissions, and then comes the automobile sector. We think that automobile is the biggest sector, but the energy sector is the biggest sector, which does these things. And if we relax something, then of course it is going to have some more negative impact. That's what my initial thought is. I think that's all, sir. Good. Every question is, I think, correlated, and you have already answered. And as sir said, your session was very much self-explanatory. So thank you so much, sir, for the incredibly enriching and thought-provoking session. Your detailed perspectives on climate change, data-driven forecasting, and sustainable solutions have not only educated us, but also deeply inspired every participant of Bharat 2025. Your work is a shining example of how science serves both nature and humanity. On the behalf of AgriMeet Foundation, Bharat team, and all the attendees of International Winter School, I express our heartfelt gratitude for your valuable time, your brilliance, and your generous sharing of knowledge. Thank you once again, sir, for making day 2 so meaningful and impactful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for having me. So I'm just logging out. थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. My pleasure always. An important note for everyone, there are no sessions on Saturday and Sunday, and it is the session from Monday to Friday only. एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा पार्टिसिपेंट्स के बीच में. कल का लेक्चर कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स से होगा, तो उनकी टाइमिंग और भारत की टाइमिंग में डिफरेंस है. तो कल की क्लास 6:30 से ना होके 7:30 पे होगी, क्योंकि वहां 7:30 PM पे सुबह का 6 बज रहा होगा. ठीक है, मैं अनाउंसमेंट डाल दूंगा ग्रुप में, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो कल की क्लास कैलिफोर्निया के स्पीकर के कारण 7:30 PM पे होगी. सभी पार्टिसिपेंट्स लेफ्ट कर सकते हैं. थैंक यू.